श्री गणेशाय नमः। श्री शिवमहापुराणे पंचमसंहितायां त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। शौनक उवाच। आचार्यपूजनं ब्रूहि सूतव्यास गुरुधुना ग्रन्थस्य श्रवणान्ते हि किं कर्तव्यं तदप्यहो। सूत उवाच पूजयेदिति भक्त्याचार्य श्रुत्वा कथां परां ग्रन्थान्ते विधिवद्याचार्याय प्रसन्नधिः ततो वक्तार मानम्य सम्पूज्य च यथाविधि भूषणे हस्तकर्णाना वस्त्रे सौम्यादिभिः सुधीः। शिवपूजा समाप्तो तु दध्यादेनु स्वस्तिकां कृत्वास्नं सुवर्णस्य पल्मानस्य सांबरं तत्रास्थाप्य शुभं ग्रन्थं लिखितं ललिताक्षरे आचार्याय सुधीर्धन्मुक्त स्याद् बन्धने ग्रामो गजो हयस्य चापि यथाशक्त्य पराणि च मुने सर्वाणि देयानि वाचकाय महात्मने विधानसहितं सम्यक् अक्षुतं हि सफलं स्मृतं पुराणं शौनकमुने सत्यमेवोदितं मया तस्माद्दानयुक्तं तु शृणुयाद्यतो मुने पुराणं निगमार्थाढ्यं पुण्यदं हृदयं श्रुते। इति श्रीशिवमहापुराणे पंचमसंहितायां व्यासपूजनप्रकारो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। मुन्योर्चु व्यासोत पतिं महाबुधे ब्रूहि सूत दयानिधे कृपया पर्या स्वामिन् कृतार्थान् कुरु प्रभो। व्यासस्य जननी प्रोक्ता नाम्ना सत्वती शुभा विवाहिता तु सा देवी राज्ञा शन्तनुना किल तस्यां जातो महायोगी कथं व्यास पराशरात् सन्देहोऽत्र महाजातस्तं भवान् चेतुर्महति। सूत उवाच। एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन् योगी पराशरा यदृच्छया गतो रम्यं यमुनायास्तटं शुभं निषादं महाधर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा न्यस्व यमुनापारं जलयानेन मामरम् इत्युक्तो मुनिना तेन निषाद सवसुतां जगो मत्स्यगन्धाममुबाले पारं नावानय द्रुतं तापसोऽयं महाभागे दृश्यन्ति गर्भसंभवा तिथिर्पुक्षुरस्ति धर्माधिशचतुरानाय पारगा इति विज्ञापिता पित्रा मत्स्यगन्धा महामुनिं संवाहयति नौकायामासीन सूर्यरोचिषं कालयोगानमहायोगी तस्यां कामातुरोऽभवत् दृष्ट्वा योगस्वरूपं न कदापि विमोहिता ग्रहीतुं कामसमुन्निर्दाशकन्यां मनोहरां दक्षिणेन करेणैतामस्पृश्य दक्षिणे करे तमुवाच विशालाक्षी वचनं स्मृतिपूर्वकं किमिदं क्रियते कर्म वाचेयं विगर्हितं वसिष्ठस्य कुले रम्ये त्वं जातोऽसि महामते निषादजा त्वं ब्रह्मान् कथं संगो घटेत नो दुर्लभं मानुषं जन्म ब्राह्मणत्वं विशेषतः तत्रापि तापसत्वं च दुर्लभं मुनिसत्तम विद्यया वपुषा वाचा कुञ्चिलेन चान्विता कामबाणवचं यातो महदाश्चर्यमित्र हि प्रवृत्तमप्यसत्कर्म कर्तुमेन न कोऽपि भुवि वारयितुं शक्ता शापभीत्यास योगिना इति संचिन्त्य हृदये निजगाद महामुनिम् तावदैर्यं कुरु स्वामिन् यावत्त्वा पारयामि न इति श्रुत्वा वचस्तस्य योगिराज पराशरा तत्याज पाणिं तरसा सिन्धुपारं गता पुनर्जग्रातां बाला मुनिकामप्रपीडिता कम्पमाना तु सा बाला तमुवाच दयानिधिं दुर्गदां मुनिश्रेष्ठ कृष्णवर्णा निषादजा भवांस्तव
तु परमोदार विचारो योगी सतम नावयोर्घटते संगो काचन योरिव तुल्य जाताया कृतिकयो सङ्गसौख्यप्रदो भवेत् इत्युक्तेन तया तेन क्षन्मात्रेण कामिनी कृतायोज न गन्धा तु रम्यरूपा मनोरमा पुनर्जघ्रातां बालां स मुनिकां पीडिता ग्रहीतु कामं तं दृष्ट्वा पुनः प्रोवाच वासवी रात्रव्या व्यवाय कर्तव्यो नादिवेति श्रुति जगो दिवासङ्गे महान् दोषो निन्दा चापि दुरा सदा तस्मात् तावत् प्रतीक्षस्व यावदवति यामिनी पश्यन्ति मानवाक्षात्र पिता मे च तटे स्थिता तयोक्तमिदमाकर्ण्य वचनं मुनिपुङ्गव निहारं कल्पयामास सद्य पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तं स रात्रि सनिर्भये व्यवाय चकिता बाला पुनः प्रोवाच तं मुनिं योगिन मोघवीर्यसत्त्वं भुक्त्वा गन्तासि मा यदि सगर्भ्या स्यां तदा स्वामिन् का गर्ति मे भवेदिति कन्याव्रतं महाबुधे मम नष्टं भविष्यति हसिष्यन्ति तदा लोका पित्रं कीब्रवीमयम् पराशरुवाच रम्बाले मया सार्धं स्वच्छदं कामजे रसे सवीयाभिलाषमाख्यायि पूरयामयधुना प्रिये मदाज्ञा सत्यकर्णा मना सत्यवती भव वन्दनीया तथा शैशैर्योगिभिस्त्रिदशैरपि सत्यवत्युवाच जानते न पिता माता न मान्ये भुवि मानवा कन्याधर्मो न मे हन्या यदि स्वीकुरु मा तदा पुत्रक्ष त्वत्समो नाथ भवेद् दोत्तशक्तिमान् सौगन्ध्य सर्वदाङ्गे मे तारुण्यं च नवं नवम् पराशरुवाच शृणु प्रिये तवाभीष्टं सर्वपूर्णं भविष्यति विष्णुवंशं सम्भव पुत्रो भविता ते यशा किञ्चिदेकारणं विद्धि यतोऽहं कामपीडिता दृष्ट्वा चापसरसां रूपं नामुहान् मे मना क्वचित् मीनगन्धा समालक्ष्य त्वामोहवृषगो भवं न बाले भालपटस्थो ब्रह्मलेखोऽन्यथा भवेत् पुराणकर्ता पुत्रस्ते वेदशाखा विभाकृत भविष्यति वरारोहे ख्यातकीर्ति जगत्त्रये इत्युक्त्वा त्वां सुरं याङ्गी भुक्त्वा योगविशारदा वव्राज शीघ्रं यमुना जले स्नात्वा महामुने सापि गर्भं दधाराशु द्वादशातं सम्प्रभम् असूतसूर्यजाद्वीपे कामदेवमिवात्मजं वामेकमण्डलु बिभ्रदक्षिणे दण्डमुत्तमं विशङ्गिभिर्जटाभिक्ष राजितो महसां च य जातमात्रस्तु तेजस्वी मातरं प्रत्यभाषत गच्छ मातर्य यथा कामं गच्छमायहमत्परं मातर्यदा भवेत् कार्यं तव किञ्चित् दीप्तिसतं संस्रमृतशाग्मिष्यामि त्वदिच्छा पूर्तिहेतवे इत्युक्त्वा मातृचरणावभिवाद्य तपोनिधि जगाम च तपाकर्तु तीर्थं पापविशोधनं सापि पित्रन्तिकं याता पुत्रस्नेहाकुला सती समर्हन्ति चरितं सुनोर्वर्यन्ति स्वभाग्यकं दीपे जातो यतो बालस्तेन दैप्यानो भवत वेदशाखा विभजना वेदव्यास प्रकीर्तिता तीर्थराजं प्रथमतो धर्मकामार्थमोक्षदं नैमिषं च कुरुक्षेत्रं गङ्गाद्वारं वन्तिकाम् अयोध्यां मथुरां चैव द्वारकामरावतीं सरस्वती सिन्धुसङ्गं गङ्गासागरसङ्गमं काञ्ची च त्रयम्बकं चापि सप्तगोदावरीतटं कालञ्जरं प्रभासं च तथा बदरिकाक्षमं महालयं तथोकारक्षेत्रं वै पुरुषोत्तमं गोकर्णभृगु
कच्छं च भृगुतुङ्ग च पुष्करं श्रीपर्वतादि तीर्थानि धारातीर्थ तथैव च गत्वा वगाह विद्धिना चचार परमं तप एवं तीर्थानये यनेकानि नानादेशस्थितानि ह पर्यटन् कालिकासु न प्रापद्वाराणसीपुरीं यत्र विश्वेश्वर साक्षादन्नपूर्णा महेश्वरी भक्तानाममृतं दातुं विराजेते कृपानिधि प्राप्य वाराणसीतीर्थं दृष्टाथ मणिकर्णिकान् कोटिजन्मार्जितं पापं तत्याज स मुनीश्वर दृष्ट्वा लिङ्गानि सर्वाणि विश्वेश प्रमुखानि च सनातवा सर्वेषु कुण्डेषु वापि कूप्सर्सु च नत्वा सर्वान् गौरी सर्वाप्रणम्य च सम्पूज्य कालराजं च भैरवं पापभक्षणं दण्डनायकमुख्याक्षं गणात् स्तुत्वा प्रयत्नत आदिकेशवमुख्याक्षं केशवान् परितोष्य च लोलार्कमुख्य सूर्याक्ष प्रणम्य च पुनः पुनः कृत्वा पिण्डप्रदानानि सर्वतीर्थेष्वतमृत स्थापयामास पुण्यात्मा लिङ्गव्यासेश्वराभिधं यद्दर्शनादेव्ये दिप्रा नरो विद्याशु वाक्पति लिङ्गान्यभ्यर्च विश्वेश प्रमुखानि सुभक्तिता असकृच्छन्त्ययामासं किं लिङ्ग श्रीप्रसिद्धं जमाराध्य महादेवं विद्या सर्वा लभेमहि पुराणकृत्यता शक्तिर्ममास्तु यदनुग्रहात् श्रीमदोपकारनाथं वा कृति वा स्वासेश्वरं किमु केदारेशं नु कामेशं चन्द्रेशं वा त्रिलोचनं कलेशं वृद्धकालेशं कलेश्वरमेव वा ज्येष्ठं जम्बुकेशं वा जैगीषव्येश्वरं तु वा दशाक्षमेधमनीशानं ब्रह्मचण्डेशमेव वा त्रिकेशं गुरुरेशं वा गोकर्णेशं गणेश्वरं प्रसन्नवदनेशं वा धर्मेशं तारेकेश्वरं नन्दिकेशं निवासेशं पत्रीशं प्रीतिकेश्वरं पर्वतेशं पशुपतिं हाटकेश्वरमेव वा बृहस्पतीश्वरं वाथ तिल्भाण्डेश वा भारभूतेश्वरं किं वा महालक्ष्मीक्षरं तु वा मरुतेशं तु मोक्षेशं गङ्गेशं नर्मदेश्वरं कृष्णेशं परमेशरशानरत्नेश्वरमथापि वा यमुनेशं लाङ्गलीशं द्विक्षेश्वरं विभुम् अभिमुक्तेश्वरं वाथ विशालाक्षीशमेव वा व्याघ्रेश्वरं वराहेशं विद्वेश्वरं थापि वा वरुणेशं विधीशं वा हरिकेश्वरं तु वा भवानीशं कपीदेशं कन्दुकेशमजेश्वरं विश्वकर्मेश्वरं वाथ विरीक्षरं थापि वा नादेशं कपिलेशं च भुवनेश्वरमेव च वा वाशपूलीशं महादेवं सिद्धीश्वरमथापि वा देवेश्वरं वीरभद्रेशं भैरवेश्वरम् अमृतेशं सतीशं वा पार्वतीश्वरमेव वा सिद्धेश्वरं मन्तेव्येश भूतिशर्मथापि वा आषाढीशं प्रकाशेशं कोटिरुद्रेश्वरं तथा मदालसेक्षरं चैव तिल्पनेश्वरं किं वा हिरण्यगर्भेशं कीवाक्षिमध्यमेश्वरम् इत्यादि कोटिलिङ्गानां मध्येऽहं किमुपाक्षये इति चिन्तातुरो व्यास शिवभक्तिर्तात्मवान् शं विचारयामास ध्यानस्थिरचेतसा आज्ञातं विस्मृतं तावन्निष्पन्नो मे मनोरथा सिद्धे सम्पूजितं लिङ्गं धर्मकर्माथ मोक्षदं दर्शनात्स्पर्शनाथस्य चेतो निर्मलता मयात् उद्घाटितं सदैवास्ति द्वारं सर्वगस्य यत्र हि अविमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्धक्षेत्रे हि तत्परं यत्रास्ते परं लिङ्गं मध्यमेश्वरसंज्ञकं न
नेश्वरादन्यालिङ्गं काश्यं हि विद्यते यदर्शनाथ मायान्ति देवा पर्वणि पर्वणि अतं सेव्यो महादेवो मध्यमेश्वर संज्ञक अस्य राधर्नतो विप्रा बहवः सिद्धिमागता य प्रधानतया काश्या मध्यते तिष्ठति शङ्करा स्वपुरी जनसौख्याथ मतोऽसौ मध्यमेश्वर तुम्बुरु नार्मगन्धर्वो देवऋषि नारदस्तथा अमुमाराध्य सम्पन्नो गानविद्याविशारदो अमुमेव समाराध्य विष्णुर्मोक्षप्रदो भवत् ब्रह्मविष्णुश्च रुद्रक्ष सृष्टिपालकहारका धनाधीश कुबेरोऽपि वामदेवो हि शैवराट् खट्वाङ्गो नाम भूपालोऽन्न पत्योपत्यवान् भूत् अप्सरा चन्द्रभामाख्या नृत्यन्ती निर्भावता सदेहा कोकिलालापा लिङ्मध्ये लयं गता श्रीकरो गोपिकासूनु सेवित्वा मध्यमेश्वरं दानपत्यं समालेभे शिवस्य करुणात्मना भार्गवो गीष्पतिक्षोभो देवो दैत्यसुरार्चितो विद्यापारङ्गतो जातो प्रसादान् मध्यमीशितो अहं पर्यत्र सम्पूज्य मध्यमेश्वरमीश्वरं पुराणकृता शक्तिं प्रापयस्यामि तरसा ध्रुवम् इति कृत्वा मतिं धीरो व्याससत्यवतीसुता भगीरथ्यम्भसि स्नात्वा जघ्रानियं प्रति क्वचित्पर्णाशनो भूत्वा फलशाकाशं कच्चित् वातभुग्जल भुक्त्वापि कच्चिन्नर्शन्व्रति इत्यादीन्यमैर्योगी त्रिकालं मध्यमेश्वरं पूजयामास धर्मात्मा नानावृक्षोदवे फले इत्थं बहुतिथे काले व्यतीते कालिकासुता स्नात्वा त्रिपथघातोय यावदायाति सप्रगे मध्यमेश्वरमीशानं भक्ताभीष्टवरप्रदम् तावदर्श पुण्यात्मा मध्यलिङ्गं महेश्वरम् उमाभूषित वामाङ्गव्याघ्रचर्मोत्तरीयकं जटाजूटचलदङ्गातर्गैशारुविग्रहं लसच्छारदबालेन्दु चन्द्रिकाचन्द्रितातालकं भस्मदधूलितसर्वाङ्कपूरार्जुनविग्रहं कर्णान्ताय नेत्रं च विद्रुमारुन्दच्छन्दं पञ्चवर्षाकृतं बालं बालकोचिद्भूषणं दधानं कोटिकन्दर्पदर्पहानितनोद्युतिं नग्नं प्रहसि तास्य व्रजं गायतं साम्लीलया करुणपार पार्थोऽधिभक्तवत्सलनामकाम् आशुतोष मुमाकान्तं प्रसादो सुमुखं हरं समालोक्य स्तुतिं चक्रे प्रमेघदया गिरा योगिनामप्यगम्यं तं दीनबन्धु च दातुकं वेद्व्यासुवाच देवदेव महाभाग शरणगतवत्सला वाङ्मनकरं दुष्प्राप्य योगिनामप्यगोचर महिमानं न ते वेदा विदामासु मापते त्वमेव जगत्कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च त्वमाद्य सर्वदेवानां सच्चिदानन्द ईश्वर नाम गोत्रेण वाते सर्वज्ञोऽसि सदाशिव त्वमेव परं ब्रह्मा मायापाशनिवर्तका गुणत्रयेण लिपस्तत्त्वं पद्यपत्रमिवाम्भसा न ते जन्म न वा शीलं न देशो न कुलं च ते इत्थं भूतोऽपीश्वरसत्त्वं त्रिलोक्याकाममावहे न ब्रह्मा न च लक्ष्मीशो न च सेन्द्रदिवोकस न योगीन्द्रविदुस्तत्त्वं यस्य ते त्वामुपास्महे त्वत्सर्वं त्वं हि सर्वं गौरीशत्सत्त्वं पुरान्तक त्वं बालसत्त्वं युवावृद्धस्तं त्वां हृदि नज्मयहं नमस्तस्मै महेशाय भक्तधेयाय शम्भवे पुराणपुरुषादाशङ्कराय परात्मने इति स्तुत्वा शितो यावदण्डवन्यत्
पपात स तावत्स बालो हृष्टात्मा वेदव्यासं भाषत वरन् ब्रवीषवभो योगिनः मनसि वर्तते नादयं विद्यते किञ्चित्ताक्तधीनो यतोऽस्मयं तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनिर्व्यासो महान्तपः प्रत्यब्रवीत्तिकं ज्ञातं सर्वज्ञस्य तप्रभो सर्वनारात्मा भगवान् सर्वप्रदो भवान् याञ्चा प्रतिनियुङ्क्ते माकनीशो दैन्यकारिणीम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासश्यामचेतसा शुचि स्मृत्वा महादेवो बालरूपधरो ब्रवीत् बालवाच त्वया ब्रह्मा विदां श्रेष्ठ योऽभिलाषकृतो हृदि अचिरेणैव कालेन स भविष्यत्यसंशय कण्ठे स्थित्वा त्वब्रह्मान्तरायम् यमहीश्वरस्येतिहासपुराणानि स्मयं निर्पायामयम् अभिलाष्टाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतत्त्वयेवितं वर्षं त्रिकालं पठनात् कामदं शम्भुसद्यनि एतत् स्तोत्रस्य पठनं विद्याबुद्धिविवर्धनं सर्वसम्पत्करं प्रोक्तं धर्मदं मोक्षदं नृणां भ्रातुरर्थाय सुस्नातो लिङ्गं भर्जय शाङ्करं वर्षं पठनिदं स्तोत्रं मूर्खोऽपि स्याद् बृहस्पति स्त्रिया वर्ष वा पुरुषेणापि नियमालिङ्गसन्निधो वर्षं जपमिदं स्तोत्रं बुद्धिं विद्यां च वर्धयेत् इत्युक्त्वा स महादेवो बालोलिङ्गनल्यलीयत व्यासोऽपि मुच्नक्षुणि शिवप्रेमाकुलोऽभवत् एवं लब्धवरो व्यासो महेशामध्यमेश्वरात् अष्टादश पुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया ब्रह्मपाद्यं वैष्णवञ्च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परम् आगमेयं रमावैवर्तं लैङ्गवाराहमेव च वामनाख्य ततं कौर्मं मातस्यं गरुडमेव च सकान्द तथैव ब्रह्माण्डाख्यं पुराणं च कीर्तितं यशस्यं पुण्यदं निर्नाश्रोतनाशाङ्करं यशा सुतवाच अष्टादश पुराणानां पूर्वं नामोदितं त्वया कुरु निवर्चं तेषामिदानीं वेदवित्तमा व्यासुवाच अयमेव कृतं रक्षस्तण्डिना ब्राह्मयोनिना नन्दिकेश्वरमुद्दिश्य स यदा ब्रवीमि ततः नन्दिकेश्वरवाच यत्र वक्ता स्वयं दण्डी ब्रह्म साक्षात् चतुर्मुखा तस्मात् ब्रह्मसमाख्यातं पुराणं प्रथमं मुने पद्यकल्पस्य महात्म्यं तत्र यस्यामुदाहृतं तस्मात् पाद्यं समाख्यातं पुराणं च द्वितीयकं पराशरकृतं यतुं पुराणं विष्णुबोधकं तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोभदेतत यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितं बहु शैवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च भगवत्याक्षदुर्गायाक्षरितं तत् यत्र विद्यते ततो भागवतं प्रोक्तं ननु देवी पुराणकं नारदोक्तं पुराणं तु नारदीयं प्रचक्षते यत्र वक्ता भवत्तण्डी मार्कण्डेयो महामुनि मार्कण्डेयपुराणं हि तदाख्यातं च सप्तमम् अग्नियोगात् दाग्नेयं भविष्योक्ते भविष्यकं विवर्तनाद् ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवैवर्तमुच्यते लिङ्गस्य चरितोक्तत् वातपुराणं लिङ्गमुच्यते वराहस्य च वराहं पुराणं द्वादशं मुने यत्र स्कन्दस्वयं श्रोता वक्ता साक्षान् महेश्वर ततु स्कन्दसमाख्यातं वामनस्य तु वामनं कौमकूमर्स्य चरितं मातस्यं मत्यसेन कीर्तितं गुरुरस्तु स्वयं वक्ता यद्दारुसंज्ञकं ब्रह्माण्डचरितोक्त
तवादब्रह्माण्डपरिकीर्तितं श्रुत्वाच अयमेव मया कारी प्रक्षोभ्यासाय धीमते तथा सर्वपुराणान्मया निर्वचनं श्रुतम् इमं व्याससमुत्पन्नं सत्यवत्यां पराशरात् पुराणसंहिताक्षक्रे महाभारतमुत्तमं पराशरेण संयोगपुनाशं पुण्युना यथा सत्वत्या यः ब्रह्मान् संशयितुर्महसि सकारण्यें पति कथित्वा शर्यकारिणी महतां चरिते चैव गुणाग्राहा विचक्षणे इदं रहस्यं परमं य शृणोति पठत्यपि स सर्वपापनिर्मुक्त ऋषिलोके महीयति। इति श्रीमहापुराणे पंचमहासंहितायां व्यासोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः।